Hello friends, hope all of you are doing well. So welcome to the part 2 of the video title as the previous year's question paper discussion of general prologue to the Canterbury Tales and basically the Knight's Tale and the Nun's Peace Tale. So a general reminder for all our subscribers कि जिन लोगों को अभी भी दिक्कत हो रही है अपने assignments complete करने में kindly do contact us in our WhatsApp number given in the description. हम लोग आपको फ्री में असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, आप उससे इनपुट ले सकते हैं, अपना भी कुछ अलग से उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो प्लीज़ हरी. So let's start the video with June 2015 RTC from the Canterbury Tales. It goes something like this. And specially from every shire end of England to Canterbury they went, the holy peaceful martyr for to seek that him hath holpen when they were sick. सो यहाँ पे हम लोग को देखते ही पता चल रहा है कि इस आर्टिस्ट में कैंटरबरी और इंग्लैंड का नाम स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है. तो एज यूजुअल एज आई टेल ऑल माय स्टूडेंट्स, अगेन आंसर को 3 पार्ट में स्प्लिट करेंगे: रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड कमेंट. रेफरेंस में आप लोग लिखोगे कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम सॉशर्स द कैंटरबरी टेल्स. कंटेक्स्ट, अब इसको अगर आप ठीक से पढ़ोगे लाइन बाय लाइन देन यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो पिलग्रिमेज जो लोग जा रहे हैं, जो 29 पिलग्रिम्स है प्लस जॉफ्री सॉशर द ऑथर, सो उन लोग का जो पर्पस है कि कैंटरबरी में क्यों जा रहे हैं उसको डिस्क्राइब किया गया है. ओके, सो दिस इज एक्चुअली सेटिंग द प्लॉट ऑफ द एंटायर टेल. So in the context, in the general prologue of the Canterbury Tales, the poet set the background and introduces the pilgrims who represent the different classes of the society. General prologue में वही किया गया है कि सारे pilgrims को describe किया गया है और इस बात को भी specifically mention किया है कि वो लोग कैंटरबरी में क्यों जा रहे हैं. सो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा कि आपको कहाँ तक समझ में आया है, आपको क्लियर हुआ है या नहीं ये टॉपिक, और जहाँ पे भी आपको दिक्कत है हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि टू कवर इट अप. And let's move on to the comment section. Also, one of the student asked me the other day कि what should the word limit for the RTCs. So it's very clear, you see 10 marks का question usually पूछा जाता है RTC से, so you should have properly around not less than, I mean, like 80 to 100 words in the comment section. Make sure that you at least can drag the plot to some extent or add a few inputs of your own. सो यहाँ पे हम लोग कमेंट में क्या लिख सकते हैं: द प्रोलॉग ओपन्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिवाइवल ऑफ स्प्रिंग. सो ये जो जर्नी किया गया है, जो पिलग्रिमेज किया गया है, उसको स्प्रिंग महीने में किया गया है. ओके, बहुत ही अच्छा महीना होता है टू डू एनी जर्नी, और इंग्लैंड का वेदर का तो क्या ही कहना. सो द रीजन फॉर दिस वुड बी अंडरस्टूड एज द बैकग्राउंड फॉर पीपल टू ग्रो ऑन ए पिलग्रिमेज. तो यहाँ पे भी ये भी बताया गया कि स्प्रिंग महीने को स्पेसिफिकली चूज किया गया है इस पिलग्रिमेज में जाने के लिए. ओके, द होली बिस्फुल मार्टर हैव्स here refers to Thomas of Canterbury. So वो जहाँ पे जा रहे हैं कैंटरबरी टू विजिट द श्राइन, ओके, विजिट द श्राइन ऑफ थॉमस ए बैकेट. सो इसी बात का यहाँ पे मेंशन किया गया है ऑन हुज नेम द पोएम्स टाइटल वाज गिवन. सो यहाँ पे आप लोगों को कीवर्ड्स एकदम प्रॉम्प्टली मिल जाएगा क्योंकि इंग्लैंड और कैंटरबरी का स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है. तो देयर इज नो कंफ्यूजन हियर कि दिस इज बीन टेकन फ्रॉम द जनरल प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स. The poet wants to convey the sacred purpose of the pilgrimage. This sets the background of the poem. Okay. In the June 2015, one more question was been asked from the Canterbury Tales, which goes something like this: like discuss Chaucer's handling of the fable in the Nun's Priest Tale. So we'll save this question for some other video because here we are specifically discussing about the artists. Coming to June 2014 question: a knight there was, and that a worthy man, that fro the time that he first began to riden out he loved chivalry, throughout and honor, freedom and courtesy. Okay, so guys, again the mention of the knight is done here in the RTC. So clearly we can understand that it has been taken from the Canterbury Tales. The reference will go something like this, that these lines have been extracted from Chaucer's The General Prologue to the Canterbury Tales. मैं पहले भी आप लोग को बोल चुका हूँ कि जनरल प्रोलॉग में क्या किया गया है. जनरल प्रोलॉग इज एक्चुअली यूज्ड बाय द सॉसर टू सेट द टोन ऑफ द टेल. ओके, वहाँ पे सारे जो पिलग्रिम्स हैं मोस्ट ऑफ देम को डिस्क्राइब किया गया है फिजिकली, एंड मोस्टली द इम्पॉर्टेंट एंड द प्राइम कैरेक्टर्स लाइक द नाइट हु हैपन्स टू बी द मोस्ट ऑनरेबल पर्सन इन द एंटायर ग्रुप. सो आप लोग को रेफरेंस में ये लिखना है कि इस लाइन को कहाँ से लिया गया है: जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स. अब अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे देन यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड, इवन दो इट इज रिटन इन मिड इंग्लैंड डायलैक्ट, मिडिल इंग्लिश,
If we read it, we can understand that the poet here is trying to describe the night. He is actually fascinated by the gracefulness and the down to earth nature of the night. So, in the context part, basically, the pilgrims were a diverse group who were on their way to Canterbury. They happily agreed to let the poet join them. That night, the group slept at the Tabard Inn and woke up early the next morning to set off on their journey. Before continuing the tale, the narrator declares his intent to list and describe each of the members of the group. So this is the entire context in which the lines has been taken. टाबार्ड इन में वो लोग रुकते हैं, अगले सुबह वहाँ से वो लोग अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे फॉर द पिलग्रिमेज एंड अर्ली मॉर्निंग द पोएट decides that he will narrate or he will you know give a small idea about the entire character, all the characters here. So comment section में आते हैं guys. Comment section में आपको लिखना है कि here Sasha has described the knight. Knight is the noblest of the pilgrims, embodying military prowess, loyalty, honor, generosity, and good manners. The knight conducts himself in a polite and mild fashion, never saying an unkind word about anyone. He loves chivalry, truth, and honor. He is also an advocate of freedom and courtesy. तो आपको इसी तरह कमेंट में पूरे नाइट को डिस्क्राइब करना है. रिमेंबर गाइस, यू डोंट नीड टू डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स ऑफ द नाइट हियर, जस्ट उनका जो एंटायर कैरेक्टर है उसको डिस्क्राइब करना है. बट येस, इफ़ यू जस्ट आस्क मी माई पर्सनल ओपिनियन कि सर आप कैसे इसको लाइक 80 to 100 वर्ड्स में ले जाओगे, तो बीच में यू कैन एक्चुअली एड लिटिल बिट अबाउट हिज फिजिकल अपीयरेंस ऑल्सो, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस आर्टिस्ट ऑफ द प्रीवियस वीडियोस. जिन लोगों ने देख रखा है उन लोगों को ठीक से पता है कि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ. But yes, mostly you should focus in the characters, okay, specifically the character values of the knight. जून 2014 में और एक सवाल पूछा गया है कैंटरबरी टेल्स से, which goes like, what use does Chaucer make of the device of pilgrimage? So again, as I mentioned earlier, we are discussing specifically and explicitly about the artists. We'll skip it for the video sake and we'll move on to the next question. जून 2013 टर्म एंड एग्जामिनेशन में जो कैंटरबरी टेल से सवाल पूछा गया है, बट फॉर टू टेल यू ऑफ हिज एरे हिज हॉर्स वे गॉड बट ही वॉज नॉट गे ऑफ अ स्टेन ही वीव्ड ए गिपन एल बिस्मॉट विथ हिज हैबगियन और ही वॉज लेट वाई कम फ्रॉम हिज स्मेज एंड वेंट फॉर टू डन हिज पिलग्रिमेज. Now, I'm sure that you people are finding this artist very familiar. ये इसलिए लग रहा है guys क्योंकि इसको हम लोग जून 2019 और जून 2017 के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं. It is exactly the same question, so we are not going to discuss it here now. आप लोग प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हो, या जून 2017 का जो वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया जहाँ पे भी है वो अगर आप लोग देखोगे प्रीवियस वीडियो इस वीडियो को मिला के, you will have a proper understanding how to attempt this question. June 2013 term and examination. The question that has been asked from the Canterbury Tales goes something like this. Madame, the sentence of this Latin is, woman is man's joy and all his bliss. For when I feel at night your soft side, albeit that I may not on your right, for that our preach is mad or narrow, alas. Okay, so here obviously if you read it couple of times you'll understand that the narrator here or the speaker here is trying to impress or is trying to say few things in favor of women. So specifically it has been taken from the Nun's Priest tale. अब तक आपको पता ही चल ही चुका होगा. So reference में हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे कि above lines have been extracted from the Nun's Priest tale from Chaucer's The Canterbury Tales. Context will go something like this, that these lines were voiced by Chanticleer while describing Partelote's beauty. अभी जिन लोगों को मतलब चांटिक्लियर और पार्टीलॉट के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन कि ये दो कैरेक्टर्स कौन है, प्लीज़ गो बैक एंड सी द वीडियोस ऑन नन्स प्रिस्ट टेल जो हम लोग के चैनल में हम लोगों ने पोस्ट कर चुके हैं. उससे आप लोग को नन्स प्रिस्ट टेल का पूरा जो प्लॉट है वो समझ में आ जाएगा. और जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है अबाउट द नाइट्स टेल, अबाउट द योर नन्स प्रिस्ट टेल, then please go ahead and see those videos first in order to have a proper clarity. Okay. For those who have already seen, let's come to the comment part. Explaining the meaning of Latin sentence, Chanticleer says that woman is man's joy and therefore source of all his happiness. So यहाँ basically क्या हो रहा है कि Chanticleer जो होता है, he is trying to impress his most beautiful wife, Partelote, by saying few sentences in Latin, okay, by saying that woman is man's joy and therefore source of all his happiness.
But remember guys, though modern feminist criticism might object to such a sentence, लेकिन हम लोग को ये भी ध्यान पे रखना है कि this sentence it was not at all charismatic to utter a sentence like this in Saussures time. Okay, जो feminist है वो obviously object करेंगे कि हम लोग अगर इसको directly बोले कि woman is man's joy, and so we are feminism की तरफ नहीं जाएंगे हम लोग. So Chanticleer further says, it's right that woman is the source of man's happiness, because when I feel the soft touch of your feather during narrowness of your perch, I can't amount you. I still feel happy, for I know that no nightmare or dream can bother me. सो नॉन्स प्रीस टेल का प्लॉट जो होता है उसके बीचों बीच मतलब ऐसा होता है कि चांटिक्लेयर को एक सपना भी आता है जहाँ पे उसको दिखाई देता है कि एक फॉक्स और एक हाउंड लाइक क्रिएचर उस पर हमला करके उसको मार डालता है. लेकिन पार्टिलॉट बीइंग द inspirational wife of Chanticleer tries to console him, and in return Chanticleer is also convinced to a little extent, and he tries to convey his feeling that as long as Partilot is there, he is always happy and no dream can bother him. ओके सो जून 2013 को अभी ख़त्म करके हम लोग अगले साल में जाते हैं, पिछले साल में जाते हैं, आई एम सॉरी. जून 2012 में एक ऐसा टाइप क्वेश्चन पूछा गया था. द होस्ट वांटेड टू हियर अ स्टोरी एज मे आवर हर्ट्स ग्लैड. डज द नॉन्स प्रीस टेल मेक यू ग्लैड? इलस्ट्रेट योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल्स फ्रॉम शॉर्ट्स टेक्स्ट. ठीक है, ये क्वेश्चन आर्टिसी नहीं है, आई नो दैट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं कि नॉन्स प्रीस टेल क्या आप लोग को does it give you a hint of happiness, does it make you glad? Then please comment on the comment section, do let me know, and obviously I'll discuss this question in the upcoming videos. June 2011 term and examination. The question that was asked from this year from the Canterbury tale goes something like this. O Chanticleer, accursed be that morve, that thou into that yard flow fro the beams, thou were full valley warned by daydreams, that tilky day was perilous to thee. All right. Okay, once again, if you see here, obviously the character का नाम mention किया गया है, तो it's very important to know the characters of a particular story, of a particular plot. That gives you a head start and also gives you a upper hand in describing the entire story in a very precise manner. Fine. So you already know that this lines has been taken from the Nance Priest tale clearly. So poem is written in the form of a fable in which animals speak and act like humans. So in my Nance Priest tale video I've already said, मैंने पहले ही mention कर दिया था कि it's a fable actually. Okay, fable क्या होता है? It's actually a story where all the animals are playing the lead role in the foreground, and there might be a couple of characters in the background of the story, but mostly the entire story premise around the animals. Okay, and they act like animals, they are humans actually. Fine. So in the context part in this poem, the protagonist, the Chanticleer, a proud roaster, dreams of his approaching doom in the form of a fox. He recounts stories of prophets who foresaw their deaths, dreams that came true. So as mentioned before, Chanticleer dreams a nightmare. Okay, जहाँ पे उसको एक fox और एक hound जैसा creature दिखता है जो उसको मार डालता है. Fine. So ये ही बात वो अगले दिन अपने wife Partilot को बता रहा होता है. And he also gives examples of some people who saw or foresaw their deaths. Okay, and those dreams actually came true. So he was giving those examples to Partilot in order to convince her that उसका जो nightmare है उसको importance देना चाहिए. But Partilot obviously was not convinced by the explanation or the clarification that Chanticleer was giving. So the context power will revolve around this entire lines. In the comment part, again you have to mention about the entire thing in a very discreet manner, like something like this, that unfortunately Chanticleer's own dream came true. A fox full of sky iniquity, who had tricked Chanticleer's father and mother to their downfalls, lies in wait for him in bad hopes. When Chanticleer spots the fox, he plays his prey's inflated ego and overcomes the cock's instinct to escape, insisting that he would love to hear Chanticleer's crow, just as his amazing other did, with outstretched eyes closed and standing on his tiptoes. When the cock sticks his neck out and closes his eyes, he is promptly snatched from the yard in the fox's jaws. So in the comment part, actually I have like stretched out the story, going little bit away from what is given in the entire paragraph. As I've mentioned before, it's a 10 marks question, so you have to like little bit, you're allowed to stretch a little bit
So it's up to you guys. June 2011, the next question that came from the Canterbury's Tale, the name the three major sources of Chaucer's vocabulary. How does each source contribute to his poetry? This is a very important question, even though it is not an RTC, but we'll discuss it in some other video. Remember guys, अभी तक हमने जो भी questions discuss किए from the last video to this video, it was specifically meant to attempt the RTCs. Okay, जो ऐसे type questions है उन लोगों को discuss करना अभी भी बाकी है. तो ऐसा मत सोच लो कि ये दो वीडियोस देख के आप मतलब जो कैंटरबरी टेल से जॉफरी सॉशर के थ्रू उसको आप लोगों ने पूरा मास्टर कर लिया है. Yes, you have done around 60 to 70% preparation from the artists from the previous video to this video. But again, I strictly recommend कि you also read the entire text so that आप लोग को एक you know एक head start मिले, आप लोग कॉन्फिडेंट फील करो. और जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस हम लोगों ने स्किप किया है all throughout this years, we'll discuss in the upcoming videos. So this is all about the video guys. Hope you all loved it. I mean like we are putting a lot of hard work here. So please do let us know in the comment section ki how you are liking our approach, and if it is helping you in any way, it means a lot to me guys. So do comment, and yes, of course, like the video if it happens to profit you in any way. And once again a small reminder कि जिन लोगों ने अभी तक assignment submit नहीं किया and are struggling to write the assignments, please WhatsApp us in our WhatsApp number which is given in the description. We'll be providing you the free assignments, and as usual, God bless you and thank you all.